Hello, my friend. Namaskar. So, in this video, we are going to see a prefix to infix, and we are going to see the PYQ questions asked in the GATE and ISRO examination. तो ये क्वेश्चन आपको ISRO के अंदर आया है 2020 में. So, I will use Hindi and English, both languages, so that you can understand it. Okay. So, let's see the basic and let's see the question later on. Okay. So, when you are going to solve the question, I can say prefix to infix. So, you need to start from the left. हमेशा आपको ये बोला जाता है कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है. So it means uh, when you are going to solve, so we usually follow this approach, okay? But when you are going to solve for prefix to infix, so you need to solve from this side, okay? So this is incorrect. So let's suppose if it is written to you a plus b like this, okay? So you need to solve start from this, okay? So from this side end you need to solve. So from the right hand to left hand you need to solve. Okay. So any operator which is given to you, let's suppose it is given. So let's suppose this is my infix. So how I will write prefix? So I will write pre means plus a plus b, and how will write postfix? So it means a b plus. Okay. तो ये मान लो एक स्टेटमेंट है जिसका मेरा बोल सकते हो ये आपका इनफिक्स है. इनफिक्स को मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स में लिखा और मेरे को पोस्टफिक्स में लिखा. अब यही मेरे को प्रीफिक्स गिवन है, मान लो प्लस ए बी लिखा है. Now I need to change into infix. Infix में जब इसको मुझे change करना होगा. So when I want to change this into infix, so I will start from this side. This side से start करना. So you will make a stack and B. So B will come after B, then A will come. Then we are having operator plus. So once the operator plus is going to come, so what we are going to do? We are going to take these elements out. So let's suppose plus is over here. So A is going to come here and B is going to come here. So it will become A plus B like this. Okay. So let's take another example so that it can more clear to you. Then we will solve this question later on. So because first understanding is important. Let's suppose it is written to you. You can say E minus B ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. इसको आपको है चेंज करना. सो स्टैक बनाएंगे तो बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसका जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा, वेन एवर इस ऑपरेटर कम, तो इसको आपको निकाल लेना बाहर, इसको यहाँ लिख लेना, इसको बाहर निकाल के यहाँ लिख लेना, इसको वापस स्टैक में एंटर कर देना. स्टैक में लिखोगे सी माइनस बी लाइक दिस. ठीक है. सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड से स्टार्ट करना है. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है. नाउ वी आर हैविंग फोर ऑप्शन. सो प्लस यू कैन से एस्ट्रिक प्लस A, B, C, D. So this is the question. Okay, let's solve this question. तो ये अपने पास है क्वेश्चन और इसको अपन सॉल्व करते हैं. Now we are having a prefix and we need to change into infix. Infix इसमें change करना है. तो asterisk plus a. So start from this side. इस साइड से start करना है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. Any trick you need to important pre to infix. So pre to infix, so always start from this side. Either what you can do optional है. What is optional? इसको आप रिवर्स में लिख लो. Write this into reverse. So D D minus B A plus. ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप इसको रिवर्स में लिख लो. इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू राइट और वेदर यू डोंट वांट टू राइट. इट इज अप टू यू. सम सॉल्व विद दिस वे. मेरा ये था कि अपने पास इतना नहीं रहता टाइम. यहीं से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से डी से स्टार्ट करेंगे. तो वी विल मेक अ स्टैक. स्टैक में यहाँ क्या आ गया, डी आ गया. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. नाउ व्हाट वी आर हैविंग सी. तो डी देन सी. देन आगे बढ़ेंगे. अब क्या आ गया, माइनस. जैसे यहाँ पे एक माइनस ऑपरेटर आया, तो व्हाट वी से कि सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों फिर इसको वापस अपने यहाँ पे वी विल पुश. तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ स्टैक ओवर हियर. बिग स्टैक. वी विल राइट सी माइनस डी. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ बी. नाउ वी आर हैविंग बी. नाउ वी आर हैविंग ए. डी माइनस डी.
A. Now we are having plus. जैसे ही आएगा प्लस आएगा, सो व्हाट विल डू, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सो व्हाट वी विल राइट ए बी माइनस टी. Okay, now what we are having asterisk over here. We are having asterisk. So मान लो asterisk है. So whenever the asterisk comes, so what we will do? ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा. So what we will write? A plus B asterisk B S asterisk. So this is our answer. Let's see in the option whether we are having this option or not. ठीक है, A plus B है. तो ऑप्शन में क्या है? A plus B into C minus D. A plus B into C minus D. So this is our answer. Okay, let's see another question. Now it will give you more clarity. So this question asked in a ISRO 2020 PYQ है ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 था शायद, 42 या 41 ऐसे कुछ था. ठीक है, let's solve this question. So always start from this side. So I will make a zoom over here so that it will be more clear to you. So first we are having G. So we will make a stack. Then we will move ahead F, G and then plus. It means we are having plus. It means we will write F इधर आ जाएगा, G इधर आएगा. So it means F plus G. Okay. Then we are having E. F plus G E. Then D. F plus G E. Now minus. Minus. So minus we are having. So what we will use to do? F plus G and D will come here and E will come here. E minus. So I will write E. Okay. Let's move ahead. Now we are having asterisk. Now we are having asterisk. So I am having asterisk over here. Once I have asterisk, it means this will come here, this will come here. So what it will do? Make another big stack. I will have E D minus E multiplied by F plus G. Okay. Now let's move ahead. Now we are having C. इस पे यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ C. Now we are having C. C के लिए सेम चीज है. तो जस्ट सेकंड, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ना. E minus E multiplied with F plus and C. इसके बाद B है, B को भी मैं मान लो यहीं पे लिख लेता हूँ. ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई D स्ट्रिक F plus E and B. After B I am having A. तो A को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ. I hope it is no issue for you. Okay. Now after that I have plus. जैसे प्लस आ जाएगा तो it means A यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा. So how it look like? It look like this. B minus E divided
plus G, B, and A plus B. Okay. After that, I'm having asterisk. After plus, I'm having asterisk. Asterisk it means this will come this side and this will come this side. So once it will come over here, तो ये लाइन तो आपकी एज इट इज है, कोई इशू नहीं है. So it will become A plus B to C. I hope no issue for you. After that we are having minus. After that we are having minus symbol. So we need to add minus over here. जैसे आपका आएगा, हम let's suppose we are having minus over here. तो लेता हूँ मैं आपके लिए. ठीक. B minus E to F plus. Now we are having minus. So this will come this side and this will come this side. So I will write over here A plus B divided with C minus E minus E multiplied with F plus G. Let's see what we have over here. So this is our answer. This is the answer what we got. And let's match with these options that we are having. So when we are going to match our options, जैसे ऑप्शन ए है, क्या आता है, ए माइनस बी, ये तो इनकरेक्ट हो गया. सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए प्लस बी इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू एफ प्लस जी. सो दिस इज आवर आंसर. So B is our answer. Okay. So we have solved this question. So I believe now whatever the exam is going to give you the question from prefix to infix, you are able to easily solve the question. So I hope now there will be no issue for you. So any question which exam is going to give you, you can easily solve.